So, first and foremost, Andrea, a huge congratulations on your debutante award. How does it feel? Thank you so Her movie much. Anek has done fabulously well, guys. Thank you so much for having me, first of all. I think the main feeling that I have is a gratitude. Gratitude to the industry for recognizing my hard work and for seeing potential in me. Gratitude to everyone back home for the immense love and support that I've had. This is a huge step for not just me, but everyone back home. And I hope to see many more people in the industry from home. Yeah. How sweet, of course. What role does Ayurveda play in your skin and hair care regime? I think for me, Ayurveda is not just about outer but inner beauty as well. I'm a huge skincare girly, so I use a ton of Ayurvedic face oils and hair oils. And I also, coming from a place where there are a lot of hills, I like to inculcate a lot of natural ingredients into my skin as well, so yeah. Aparna, coming to you. You are one of the most celebrated skincare, hair care, beauty editors. How did you pick this passion? First of all, I'm a little nervous because I'm not used to being questioned. I'm always on the other side. I'm asking the question. I'm loving this. It's perfect. All right. It started around 15 years ago, I would say. Much before I started writing on beauty, I was a journalist. I was working as a features writer. And that's the time my husband was posted to Cochin. And it was just for 11 months, and I could not have picked up a permanent job over there. So I thought of writing about travel and the culture. And I discovered that in Kerala, Ayurveda, like wherever I would go, Ayurveda would just be a way of life, right? And I realized that it really resonated with me because my grandfather was, he didn't so much say that, oh, you're following an Ayurvedic life, but he did have, we were just told that, okay, you're supposed to do this, and those were all Ayurvedic principles. So I think my love for wellness started with Ayurveda in Cochin. How lovely. Yeah, and I totally resonate with that answer. And it started with the wellness aspect. So next, when I was told by I was working in Times of India, and they said that you have to take out a publication on beauty. And I was like, okay, what do I write about beauty month after month and take out 60 pages of content? Maybe it was 120. So, but I think the fact that there was my grounding in Ayurveda, so I thought that wellness can be a part of it. Not just, color cosmetics. So when we talk about beauty, it's not just color cosmetics. It's skincare. Deeper than that. Yes, it's skincare, it's fragrances, it's hair care, and wellness. Of course. Is it difficult for you guys to vet the products before you feature? Yes. What's the screening process? I'm asking all trade secrets, guys. This is not even in the script, but it's just so interesting to know, no, to sit on this side of the table. Okay, so I would say every beauty editor, beauty writer is a guinea pig, right? And as much as we talk about beauty routines, very seldom do we follow it because you're always testing one product or the other. So I would say the process of, for me, I would say the first thing is that how does the product look, right? Because if you're looking at being featured, the first thing is how you look. If you look nice, then I go inside and see the texture, the formulation, and all that. And the second thing is, the first point of contact is visual. Absolutely. That makes sense. It's the same in my job. The first point of contact is visual. So if I see a brand, if I see a particular product, their labeling is not, they're not putting attention to what is on the package. I really doubt what is inside it. Because I feel if you don't have attention to details, yeah, packaging, and then probably you need direction to grow. You're not in the space to be featured. Of course. That reminds me of my lesson back in college of the 4 Ps. Philip Kotler. Anyway, so moving on.
So many people follow what you write. How do you personally testify for the product? What are the things that you look at? I think we've already covered this. Yes, so I look at, I also look, so whenever it's a new brand, right? When you asked me earlier, how do you feature it? I was talking more from an editorial publication point of view. But because I have a page, I also have an opportunity to support smaller brands, which I feel have the potential. And I feel one of my ways to feature, to connect with with a new brand is to speak to their founders. If the founder journey, if it is something that I connect with, then I feel that's my first point of connection. True, absolutely. A Well founder said. has to be, I want to know how much do they know the product, why have they started it, that kind of a thing. And also how invested they are. How invested in they their are. journey, how committed they are to their How own journey. committed, what is their vision? Absolutely. Okay, now this is a common question for both of you. When we change the way we look at things, the world around us changes. What's your Nazariya Badlo moment? Sorry, what's your hashtag Nazariya Badlo moment? Sorry, can you repeat the question? When we change the way we look at things, the world around us changes. It's basically all about perspective, right? So what's your Nazariya Badlo moment? I think personally, I can be really pessimistic at times, and that reflects outwardly. So I think it's really important to have a positive mindset, and also at the same time, like she said, Ayurveda is a way of life, to be able to inculcate that internally. Yeah, I don't think I have a Nazariya Badlo moment, but I hope, now that I'm here, I hope that I have one soon. Yeah. You don't have it as yet. As yet, that's a big word. Darling, you have a long way to go. There'll be many. What about yours? My Nazariya Badlo moment, I would say it's more of a habit than a moment. When I feel very overwhelmed by things, and I feel that very often I am kind of a overthinker, and that's why I have attention to details. So my Nazariya Badlo moment would be when I used my, I would say my attention to detail, my overthinking, I change it to attention to detail, and I can help others. That's amazing. Because overthinking, I can help, that way it helps in direction. And of course. Do you feel like that's your social responsibility? I don't know that much, but I think that's my personal responsibility. That's amazing. Well said. Thank That's you a very- so much, girls. It was so Thank lovely you. talking Thank to you the so both of you. much. This was fun. And now moving on. हमारे ना एक रिसर्च में था कि सो शिलाजीत रेजिनिक फॉर्म में आता है विच इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ शिलाजीत राइट सो इंडियन परसेप्शन में इतना ज्यादा शिलाजीत को सेक्स से जोड़ दिया गया है एंड व्हेन यू लुक एट नाउ यूएस राइट यूएस में शिलाजीत इज बीइंग कंज्यूम्ड अ लॉट बाय फीमेल्स बिकॉज इट इंक्रीजेस एंड हेल्प्स योर स्टैमिना एंड मेटाबॉलिज्म राइट जो इंडिया में नहीं कंज्यूम हो रहा है so a lot of perception is also what we are also trying to kill from the brand कि यार आप गलत perceptions के संग मत जियो मेरे मतलब आप जितने भी गांव में जाओगे ना विलेजेस देखोगे वहां पर अभी भी जैसे अफीम को बुरा बोलते हैं ना अफीम भी मतलब हर दवाई में अफीम होती है सो शीलाजीत भी ऐसी है अगर एज मतलब कुछ हमारे वहां पे बुजुर्ग होते हैं जो 50-60 के बाद उनके घुटने चलने बंद हो जाते हैं तो उनको शीलाजीत दी जाती है और उनको वो काम करती है उनकी लाइफ में सो ये बहुत सारी ऐसी चीजें सिर्फ उसको हटाना पड़ेगा कि शीलाजीत ओनली फॉर सेक्स दैट्स नॉट द ट्रूथ उसके बहुत सारी जो इफेक्ट्स हैं अच्छी चीजें हैं उन पे भी फोकस करो तो we'll work together on शिलाजीत इसीलिए तो मैंने बोला था आई थिंक आपने डिसाइड करके बैठे हुए हो तो युविका जी what is the secret of your skincare regime which तो मुझे because जानना है it's this तो me even I it's me, want to it's me. know this तो even I want to know which so वो देखो वो आपके लिए लिखा है always glowing always Okay. young and always glowing ओह हाउ स्वीट थैंक यू बहुत सिंपल है कुछ हाई फंडा नहीं है आई विल बी बैक टू माय आयुर्वेदा आई विल बी वेरी ऑनेस्ट या घर का खाना अवॉइड करती हूँ बाहर का खाना घर का खाना खाना बहुत सारा पानी पीना और दिल खोल के जीना मतलब इसका एवरीडे होता है एवरीडे मैं देखता हूँ कि बेबी
बाहर से शूट करके मैं आ रहा हूँ, टैनिंग मेरे को, हल्दी तुम लगा रही हो, ये कहाँ का यार? पैसे, इतना पैसा बर्बाद करती है, सारे ब्रांड्स लेके आ जाएगी, बट यूज करेगी घर का, मतलब चाहती क्या है? मैंने कहा बेबी सेटिस्फैक्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यार वन थिंग ना, ये जो हमारी कैंपेन है इसमें हमने एक हैशटैग दिया विच इज नजरिया बदलो, राइट? नजरिया बदला इज द वे, मतलब वो ऐसा कौन सा टिपिंग पॉइंट है अपनी लाइफ का जिसने आपको मजबूर किया है एक नया पर्सपेक्टिव, नए तरीके से सोचने के लिए? ऑल थ्री ऑफ यू, व्हाट वुड बी योर नजरिया बदलो मूवमेंट? सो मेरा नजरिया बदलो ये है कि मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, तो भाई मैं जैसे बोलता हूँ, मैं पंजाब से, मैं बहुत दिल से हूँ, देसी हूँ बिल्कुल, मैं जो सामने है मैं बोल देता हूँ और मैं दिल में कुछ पीछे रखता नहीं हूँ ऐसे। तो मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो मैंने बहुत सारे लोग देखे ऐसे जो मुंह पे बहुत तारीफ करते रहे और निकलती तो मैं गालियाँ देते हैं, यू नो। तो मैंने पहले तो उनको कट डाउन कर दिया, मैं उनकी लाइफ में जाता ही नहीं हूँ। और अभी मेरे बहुत कम दोस्त हैं, लाइक 4-5 दोस्त हैं जो मेरे रहते हैं, बाकी मैं पूरा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करता हूँ। जब भी मैं बॉम्बे में होता हूँ मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसके साथ रहूँ। नजरिया ये है बदलने का कि यू नो, यहाँ पे जो लोग तुम्हें दिखाते हैं वो होते नहीं है, है ना? लाइफ तुम्हें खुद देखनी है अपनी, तुम्हें खुद जीनी है और तुम्हें अपने रास्ते भी खुद बनाने हैं। तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं किसी मांग के काम नहीं करता हूँ, मैं अपने रास्ते खुद बनाता हूँ। तो मैं दुनिया को ये बोलूंगा, नजरिया बदलो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो कि कोई तुम्हें मिलेगा, तुम्हें काम देगा। आई थिंक तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा टैलेंट तुम्हें काम दिलाएगा और वही तुम्हें काम देगा। तुम कहीं देश के किसी भी कोने में बैठे हो, है ना, वहां पर अगर तुम्हें टैलेंट है ना, तुम वहां से भी निकल के वापस आ जाओगे। और कुछ लोग आके बोलते हैं, जब मैं ऑडिशन ले रहा होता हूँ कि सर हम छोटी सिटी से हैं, तो मैं बोलता हूँ छोटी सिटी नहीं होती, छोटी सोच होती है, यू नो, कि जो तुम्हें छोटा रखती है। हमारे देश के जितने भी एथलीट हैं, जितने भी यू नो ओलंपिया में खेलते हैं, वो सारे छोटी सिटी से हैं, उनकी मेहनत काम आती है ना। तो मैं बोलता नजरिया बदलना पड़ेगा, खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, ज्यादा लोगों पे कम, तभी तुम आगे बढ़ोगे। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। मैं तो यार, इट्स अ वेरी फनी थिंग, ओके, बट नजरिया बदलो, मैं तो पीछे पड़ जाती हूँ लोगों का नजरिया बदलने के लिए। आई काइंड ऑफ टेक इट ऑन माय ईगो, ओके, नहीं यार ये ऐसे कैसे सोच सकता है, ये तो गलत सोच रहा है, अब मैं इसका नजरिया बदल के छोड़ूंगी। लाइक यू नो, आई ऑलवेज लाइक टू डू थिंग्स विच आर लाइक व्हेन पीपल से अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल नहीं है यार, हम करेंगे, दिस इज नॉट द वे, यू नो, देयर हैज टू बी अ वे। तो वो नजरिया जो था, वो एक थिंकिंग हमेशा वैसी ही रही है। एंड लाइक आई बिलीव कि किसी को बोलने से नजरिया बदल नहीं सकता, अनलेस यू प्रीच इट, यू प्रैक्टिस इट ऑन योर ओन। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, आई मेक श्योर दैट जो भी मैं करूं, I don't have to tell the people कि you know you should do this, you should do that. Probably I'll just do what I want to do, and if they like it, they'll follow. And with my with the following, जैसे जैसे मैं चल रही हूँ, and if I'm getting success little by little, I think it's a great example for them, and they should just like kind of do what they want to do. So नजरिया बदलो, it's like करो यार, it's not a problem. और सबसे बड़ी बात है कि हमें ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि दुनिया क्या सोचती है। मैं दुनिया के बारे में ये बोलता हूँ कि अगर भगवान उतर के नीचे आ जाएगा ना, वही बोलेगा ना मैं भगवान हूँ, तो लोग कहेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे, अरे चलना है यार, क्या मजाक कर रहा है। तो तुम्हें खुद पे बिलीव करना चाहिए। आई थिंक लोगों का नहीं सोचना चाहिए, लोग कभी तारीफ करेंगे भी नहीं, और जो करेंगे वो सिर्फ घर वाले होंगे, और वही मैटर करते हैं। आई थिंक एब्सोल्युटली। फॉर यू युविका? For me, I'll keep this around only, your Ayurveda, and this is very honest answer. बचपन से सुनते आए हैं कि घर की चीज़ें इस्तेमाल करो, घर की चीज़ें, पर अक्ल तब आती है जब आप पूरे बर्बाद कर चुके होते हो, पैसे भी, टाइम भी, और पेरेंट्स को पूरा इरिटेट कर चुके होते हो। लेकिन वक्त के चलते why I'm saying this today, I want to carry on this in my future, with my kids, कि come back to roots. It is very important. We are losing it and people are enjoying outside. जो हमारी खुद की धरती पे हमारा जो रूट है, हम उसको भूल के लोगों को फॉलो कर रहे हैं। और हमारे घर वाले बोलते हैं ये, और बचपन से सुनते हैं, लेकिन हम भी ना, नो मॉम, नो डैड, उस चीज़ से निकल के अगर हम बेसिक ज़िंदगी में आएंगे, और मैं तो आ गई हूँ, मैं भी बहुत उड़ती थी, तो विद टाइम यू अंडरस्टैंड। सो मेरा नज़रिया बदला और अब भी बदल रहा है, और हर वक्त अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं ज़िंदगी में, तो आपका नजरिया हर रोज बदलता है। और नजरिया बदलना पड़ेगा ये भी देख के कि लोग हमेशा मेड इन इंडिया पे बिलीव नहीं करते, है ना। अगर एक चीज को आप मेड इन यूएसए के लिख के भेज दोगे तो वही सामान बिक जाएगा। अगर मेड इन इंडिया लिखा होगा तो लगेगा नहीं यार, इसमें कुछ अलग ही होगा, अरे वो उन्होंने क्या डाला होगा, उन्होंने कोई बाबा की भूती है जो लाके डाल देंगे। We should promote our roots, what we are. Absolutely, yeah. Thanks a lot, guys. It was crazy so talking Thank to you. you. Thank you. Thank All you the so best much. for the new roadie season. Thank you so much, Looks brother. very Thank you. exciting, right? Thank you for your upcoming show also. थैंक यू। वो याद रखना है वो साइन। 100%. आप लोग को भी जाना नहीं है, आप लोग को स्टेज पे ही रहना है।
We have Prince with us, so can we have a huge round of applause once again for Prince, Yuvika, Divya and Param as well. वैसे हमारे साथ सिंगर है, मैं सुबह से, सुबह मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ना, कोई तो हो जो इतना सुर में गा दे आज हमारे लिए. We have with us Prince Narula, जिन्हें आज एक गाना सारी beautiful women out there के लिए dedicate करना है. मैं गाना सुनाऊंगा उनको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि मैं पंजाबी गा रहा हूं. मैं भी तो पंजाबी हाँ, ऐदा दी केड़ी गल होगी. Everyone out there देखो. और पंजाबी गानों के बिना ना महफिल जमती नहीं है वैसे. तो अभी मेरा गाना आया था तोड़ मेरे खुद के चैनल पे जो जिसने ग्लोबल चार्ट पे रॉक किया था, तो मैं वही सुनाता हूँ. किनू बनाया हुणे जान दस दे, सीगा नक ते निशान दस दे, जिम दा शकीन लारियां ने पटता, मैनू पीण लाता क्यों समान दस दे, दस केड़े मूंह नाल रब नू जवाब देंगी, होर लुट लुट किन्ने नी सवाद लेंगी, गिल रोनी बारे जदों पुछणगे लोग दस फेर केड़ा चेहरे ते नकाब लेंगी, एवें भंग पाने तेरे पिछे रोड़ती जवानी नहीं, खम खाई तेरे पिछे खट्टी बदनामी नहीं, जेड़े मोड़ उत्ते सी तू मोड़ गई निशानी नहीं, जहर वर्गायो सच्ची मोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, जिंदगी च प्यार दी नहीं थोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, जिंदगी च प्यार दी नहीं थोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं, उदों तेरी तोड़ लगे जट नूं. क्या बात है, वंडरफुल यार. मतलब आपने तो एकदम क्या बोलते हैं वो, ये पारिवारिक है ना तो मैं बोल नहीं सकती है ना. है ना, ये फाउंडर बोल देंगे. 4 रखा है Spotify पे इस गाने ने. बहुत ही बढ़िया यार. Thanks for coming. Sagar bhai, thanks for having the, gang in the TAC family, right? Thank you for bringing them in the TAC family.